Hello bachcho, let's see this question. A solution contains sodium carbonate and sodium hydroxide. Using phenolphthalein as an indicator, 25 ml of a mixture requires 19.5 ml of 0.005 normal HCl for the endpoint. If methyl orange is the indicator, then 25 ml of the solution requires 25.9 ml of the same HCl for endpoint. Calculate the concentration of each substance in gram per liter. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट के बारे में समझना होगा। हमें क्या गिवन है? हमें सोडियम कार्बोनेट और NaOH का मिक्सचर गिवन है और फिर हम इसकी टाइट्रेशन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं HCl के साथ एंड द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज 0.005 नॉर्मल। हम इसमें दो टाइट्रेशन कर रहे हैं। इन फर्स्ट टाइट्रेशन we are using phenolphthalein as the indicator, and in the second titration we are using methyl orange as the indicator. In case of phenolphthalein as the indicator, we require 19.5 ml of HCl, and in case of methyl orange, we require 25.9 ml of HCl. So, अगर हम बात करते हैं इस केस में, तो यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl यूज्ड कितने हो जाएंगे? दैट विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ HCl 0.005 into volume, that is 19.5, that gives equal to 0.0975. That is the milli equivalent of HCl used in this titration. And the milli equivalent of HCl in methyl orange titration will be 0.005 into 25.9 ml. That gives me equal to 0.1295 milli equivalents of HCl utilized in this case. For the phenolphthalein titration, the milli equivalent of HCl will be equal to the milli equivalent of NaOH plus the milli equivalent of sodium carbonate divided by 2. So our in the second case, this is the titration for phenolphthalein as the indicator, and for methyl orange as the indicator, the milli equivalent of HCl will be equal to the milli equivalent of NaOH plus the milli equivalent of sodium carbonate. So हमें पता है milli equivalent of HCl in this case is equal to 0.0975, and in the second case it is 0.1295. Solving these two equations, we get milli equivalent of sodium carbonate is equal to, the milli equivalent of sodium carbonate will be equal to 0.064, and the milli equivalent of NaOH on solving these two equations will be equal to 0.0655. This is the milli equivalent of sodium carbonate and these are the milli equivalent of NaOH. So milli equivalent of NaOH की अगर हम solve करते हैं, so given weight divided by molecular weight 40 into milli equivalent को equivalent में convert करेंगे तो into 1000, this is equal to 0.0655. Solving this, the mass of NaOH comes out to be equal to 2.62 into 10 to the power minus 3 grams के equal. This is the volume in 25 ml of solution के अंदर इतना HCl प्रेजेंट था। हमें स्ट्रेंथ निकालनी है ग्राम पर लीटर के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ NaOH की बात करता हूँ तो स्ट्रेंथ ऑफ NaOH इन ग्राम पर लीटर कैसे निकल जाएगी? दिस इज द 2.62 into 10 to the power minus 3 gram is present in 25 ml. So अगर 1000 ml में हमें निकालना है तो it will come out to be equal to 0.1048 grams of NaOH in 1 liter. Similarly, we will solve for sodium carbonate. Milli equivalent of sodium carbonate कितना आया है हमारे पास? 0.064. So it will be given weight upon sodium carbonate का molecular weight होता है 106 into n factor of sodium carbonate कितना है हमारा 2 के equal है into 1000 to convert milli equivalent into equivalent is equal to 0.064. यहाँ पे हमने क्या लिया है? n factor 1 लिया because NaOH के केस में charge on the cation is 1 and here the number of cation is 2, so n factor here is 2. Solving this, the weight of sodium carbonate in 25 ml of the solution comes out to be equal to 3.3
392 into 10 to the power minus 3 ग्राम पर 25 ml। और अगर हमें स्ट्रेंथ निकालनी है ग्राम पर लीटर के अंदर, सो इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1357 आ जाएगा ग्राम पर लीटर। So this is the strength of sodium carbonate 0.1357 gram per liter, and this is the strength of NaOH 0.1048 gram per liter. I hope you understood it well. All the best. Thank you.